Hi guys, good evening everyone. Good evening. I hope I'm audible and visible. Hi guys, good evening. Good evening. Uh, Today we are going to do enhance RSM assignment number 3. The sheet has already been uploaded below the class. Is everyone able to find it? It has been uploaded below the class. No beta, please download it. Please download from the portal. It will be much more easier then. Okay. Okay. How was mock 40 and 41? What was the score in mock 41, 40 and then 41? Just quickly let me know in the chat box. Okay, 95, 98, 88. Very good, Parth. Very good, Vaishnavi. Yutika, practice a lot and revise topics. Yeah, read topics in which your accuracy is less than 80%. If let's say there's a passage on bailment, right? And you got three incorrect. So bailment can be revised. All these kind of things. Okay, okay. Very good, Aditi. Can be improved, but right. Very good, Pia. Very good, Garima. So what was the LOD? LOD, I would say would be easy to moderate. Easy to moderate. Acha, I'm sharing the sheet in the chat box as well. So in case anyone has not been able to download it, can do so. Okay. And then that can be improved. So Abhiga 80, we can increase it to 90-95 in the next 15-20 days. Right. How many passages can we expect? Tanmay, that cannot be said. Very difficult. Right. Chalo. I think we should start solving the sheet now. Total, it has 31 questions in total, and it has 7 passages. So I'm going to give you 32 minutes to solve the complete sheet. So you have time till 6:25 p.m. to solve the complete sheet. Okay? And your time starts now. Nesser, beta, you can download the sheet. It is attached below the class. Start solving now. Yes, Priya, it's from Enhance RSM beta. Very good, Vashi. Jyoti, the sheet has been attached below the class.
Very good, Garvit. Good to know. Priya, I've shared the PDF as well, beta. Should I first solve all the questions, beta?
Karma beta, it is not given in your RSIMs. I've uploaded the sheet in the chat box and also it is uploaded below the class. You can download it from there.
Last 5 minutes, guys. Last 5 minutes. Last 2 minutes, guys. Very good, Sindhuja.
Well, I think we should start now, right? Hi, Gunupriya. I'm good here. I'm good. फर्स्ट पैसेज मेरे को डाउट आई होप पता होगा मोटा मोटा सबको कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की एंड कॉन्ट्रैक्ट में अबाउट अ टॉपिक विच इज नोन एज क्या प्रपोजल एक्सेप्टेंस जनरल ऑफर तो होगा तो क्या होगा भाई और यहां पर एक केस की भी बात करी गई है विच इज ऑफ कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक केस सबको पता है कि नहीं जिनको नहीं पता who do not know I'll let you know so there's a very this is landmark case law which is of Carlisle versus Carbolic smoking ball right and even it has been mentioned in the passage as well right so first passage was very easy so basically here in the company advertised in the newspaper पूरा पेज का एक एडवर्टीजमेंट था where they said that they have introduced a vaccine or a medicine for influenza right so you must be knowing that in 2020 we had COVID. Similarly, in 1920s, 1930s, there was a disease called influenza, जिसका outbreak हो गया था, right? तो उससे बचने के लिए they introduced a medicine, right? Uh, which was a smoking ball, yeah, smoke ball, and they advertised that if you consume these medicines as per our prescription, you will not get influenza. So Carla, the lady here, she bought the medicine. She took as per the prescription, as per the prescribed mode. And even after taking all the medicines, she still got influenza, right? And the company said that if you get influenza, you will be getting €100, and they are super serious regarding this. And they have even deposited €1,000 in a bank just to show that they are serious about this. It's not a fake advertisement. They are super serious about it, right? And when Carlyle got this influenza, she filed a case, and later on the court said that yes, this is a general offer. It has been given to thousands of people, but anyone who performs the conditions which have been given in the advertisement, we can say that that person has accepted your offer. And once the offer has been accepted, it is a contract. And because if you do not pay the amount of €100, it will be a breach of contract. So you have to pay that amount. Okay. हाँ मोक्षित नहीं €1,000 बैंक में जमा किए थे €100 ही मिलने थे अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो €100 मिलने थे ठीक है नाउ लेट्स मूव टू द आंसर्स डायरेक्टली मार्क योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 नाउ आई थिंक प्रीटी इजी कोई बात नहीं करने का आयुषी इस पर अपन बाद में डिस्कस करेंगे बेटा जैसे कि a lot of you have got the correct answer is option A हमें ध्यान क्या देना था यहाँ पर भाई within next 30 days it has been said right and she Ravi decides to purchase the laptop on 23rd date obviously it comes within the validity period and since he has purchased the laptop within that specified time period he is eligible to get that particular amount right अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो because he has written the review he is bound to get that amount of ₹1,000. Correct answer is A. Mark your answer for question number आयुषी इसको अपन बेटा बाद में डिस्कस करेंगे अभी शीट कर रहे हैं ना मार्क योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 नाउ terms and conditions दिए right it is valid only up to Christmas Eve that is day before Christmas Maury has seen this on Christmas day right तो obviously वो valid नहीं है since this is not valid तो यहाँ पर मॉरी का क्लेम जो है वो सक्सीड नहीं करेगा तो विल सक्सीड आ ही नहीं सकता है करेक्ट आंसर विल बी बी राइट वैलिड नहीं था बिकॉज इट डिड नॉट प्रोवाइड इन कंसिडरेशन कंडीशन वाला पॉइंट नहीं है बिकॉज शी हैज परचेज द प्रोडक्ट इट्स जस्ट दैट इट इज नॉट विद इन द वैलिडिटी पीरियड mark your answer for question number 3 now now all coffees for ₹99 for next week ठीक है usually it is of ₹159 no Tanvi it will not be provided beta so you have to just
go through this session, right? ठीक है, अब क्या हुआ है, comes into shop on the first day of the promotion, तो उसको 99 में मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then Krish came after 10 days, तो भाई एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 days. कोई 10 दिन बाद आएगा तो क्या ये ऑफर वैलिड होगा, क्या ये ऑफर वैलिड होगा? No, because you have come after 10 days. The period is valid only of 7 days, right? Correct answer would be will succeed तो आएगा ही नहीं. Will not succeed because he had ordered a different coffee. Coffee से क्या फर्क पड़ता है? Since it has been written all coffees, तो वो black coffee हो या Irish coffee हो या XYZ coffee हो, it is irrelevant. ठीक है? Correct answer would be D. Mark your answer for question number 4 now. अब यहां पर क्या बोला गया, फॉर 1 week फॉर रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए, ठीक है, यूएसए, अ कस्टमर नेम्ड हीना रिसाइडिंग इन कनाडा विजिट्स वन ऑफ एबीसी स्टोर्स. भाई these are for the residents of USA. Because you are a resident of Canada, it is not applicable to you, right? You will not get that offer या जो भी यहाँ पर डिस्काउंट है, right? So she will succeed तो आएगा नहीं. She is not staying in the area, absolutely. She needs to stay in USA, तभी ऑफर मिलेगा. जैसे just to give you a very simple example, I was in Dehradun last week, right? So I was just going through the street and I noticed that there is कितना 30% डिस्काउंट, 30% या 40% डिस्काउंट था इन जूडियो, राइट? तो मैंने अपनी वाइफ को बोला भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था. तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जूडियो देहरादून, जूडियो भोपाल, इट कैन हैव डिफरेंट ऑफर्स, यस और नो? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जूडियो भोपाल में भी हो 30-40% का ऑफर होना चाहिए? नो, हर जगह का अलग ऑफर है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, राइट? इफ दे वांट दे कैन डेफिनेटली गिव द डिस्काउंट, इफ दे डू नॉट वांट डेफिनेटली इट्स नॉट एप्लीकेबल. हम ये नहीं बोल सकते कि एक जगह है इसलिए हर जगह होना चाहिए, वो मैंडेटरी नहीं है. यस, it will depend upon the company and their advertisement, their branding, right? Okay, now mark your answer for question number 5 now. Just a minute, guys. Okay, so a lot of you got the correct answer. The correct answer is option A. ठीक है, क्योंकि एक जनरल ऑफर था जस्ट लाइक कार्लाइल वर्सेस कार्बुलिक. So this case is exactly as that of Carlyle versus Carbulic smoking ball company, right? And that's why the amount needs to be given, and Mary will get the amount. Anyone who can explain the second passage? Anyone who wants to try, just raise your hand. Yes, Ayushi. Yes, Akshat. Hello. Good Hi, evening, Akshat. sir. Yes, you are audible. Sir, this passage is about culpable homicide, not a murder. Okay. So under this, we need to prove that why it is not a murder. So there are exceptions given. The Hmm. deceased must have given provocation to the accused. यानी sudden provocation जो जिसके खिलाफ मतलब जो ये केस जो इसके खिलाफ किया गया है उसे सडन प्रोवोकेशन जरूरी है उसके लिए. हाँ. और द प्रोवोकेशन मस्ट बी ग्रेव यानी मतलब बहुत ही सीवियर प्रोवोकेशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं, ऐसी प्रोवोकेशन होनी चाहिए जो अगर आपके अलावा कोई अगर दूसरा नॉर्मल पर्सन भी हो उसके लिए भी वो सेम मतलब उसी लेवल की प्रोवोकेशन हो कि वो आपका मर्डर भी मतलब कर सके. Hmm. द प्रोवोकेशन मस्ट बी सडन मतलब सडन प्रोवोकेशन होनी चाहिए.
ठीक है। The offender, by reason of the said provocation, shall have been deprived of his power of self-control like any other reasonable man would. जो offender है वो उसी के हिसाब से मतलब रिएक्ट करना चाहिए, जैसे अगर कोई नॉर्मल पर्सन रिएक्ट करता है उस सिचुएशन पे. ठीक है। he he should have killed the deceased during the continuance of the deprivation. यानी उसे जो सामने वाले को मतलब उसे किल करना ही करना, ये मस्ट मतलब मस्ट सिनेरियो है, मतलब उसे किल करना ही करना पड़ेगा. हम्म। द ऑफेंडर मस्ट हैव कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन, मतलब सामने वाले की उसे डेथ कर मतलब उस जो तभी मतलब कल्पेबल होमिसाइड का केस बनेगा जब वो सामने वाले की डेथ कर देगा. ठीक है। बाय, और जो अदर पर्सन होगा या तो उसे बाय मिस्टेक या एक्सटेंड से मारे. ठीक है। Arun Raj versus Union of India, it was observed that provocation must be such as will upset not merely a hasty, hot-tempered, and hypersensitive person, but also a person with calm nature and ordinary sense. अक्षत रीड नहीं करना यार, सिर्फ समझाना है भाई। रीड मत यस. कर, शॉर्ट में यस सर, समझा दे तो बस। ये जो प्रोवोकेशन है इसमें मेनली यही बताया गया है कि ये जो हैस्टी जो मतलब हम्म। एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड वाले पर्सन है उन्हें ही नहीं, जो ऑर्डिनरी नेचर या काम नेचर के पर्सन है उन्हें भी मतलब ये. एग्जैक्टली exactly. कोई ओवर सेंसिटिव इंसान है तो हम यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे यस. कंसिडर यस करेंगे सर. क्या एक रीजनेबल इंसान, एक तो नॉर्मल इंसान को रीजन. भी गुस्सा आता है क्या। वेरी गुड, यस. ठीक है अक्षत। सो पांच है, पांच या छह इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, जरूरी है कि भाई जिस इंसान को हमने मारा उसने हमें प्रोवोकेशन दिया हो। प्रोवोकेशन ज्यादा होना चाहिए। अब ज्यादा कितना है ये बहुत डिफिकल्ट डिटरमाइन करना, राइट। सो जब मैंने इवन पढ़ाया भी होगा क्रिमिनल लॉ तो मैंने बताया था वहां पर, इट वुड डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। एंड जो 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 मैं हूं जिसने मारा है, मैं किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आता हूँ, राइट। तो अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मेरे लिए प्रोवोकेशन का स्टैंडर्ड अलग होगा, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आता हूं, तो मेरे लिए हो सकता है अलग हो। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। प्रोवोकेशन ऑब्वियसली सडन होना चाहिए। मुझे अभी प्रोवोक किया, मैं 3 घंटे बाद आके मार रहा हूँ, डजंट मेक सेंस। सडन एंड ग्रेव दोनों होना जरूरी है, राइट। अब जरूरी है कि ऑफेंडर ने, मैंने, क्योंकि मैं सेल्फ कंट्रोल खो दिया था उस हीट ऑफ द मोमेंट में, और उस तरीके का मोमेंट था जहां पे कोई और रीजनेबल इंसान भी कर देता, इसलिए अपन उसको ग्रेव मान रहे हैं। मैंने यहाँ पे डेथ कॉज कर दिया है। जरूरी है जो डेथ कॉज की हो वो उसी की हो जिसने मुझे प्रोवोक किया है, या अगर किसी और की हुई है तो वो मिस्टेक या एक्सीडेंट से होना चाहिए। तुमने मुझे प्रोवोक किया, मैंने तुम्हारे साइड वाले को मार दिया, डजंट मेक सेंस। जिसने प्रोवोक किया है उसी को मार सकता हूं, किसी और को नहीं। अगर ऐसा होता है तो मेरा केस मर्डर में न जाते हुए नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में हो जाएगा, सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद से यही बताया गया है कि भाई हम यहाँ पर रीजनेबल इंसान देखेंगे, हम हाइपर सेंसिटिव इंसान को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। हमें ये भी देखना होगा कि कितना टाइम लगा उसको कूल होने में, क्या वो अभी भी गुस्से में था, ये सारी चीजें कंसिडर की जाएंगी। चलो, mark your answer for question number 6 now। ठीक है, ज्यादातर लोगों का सही गया है। द करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। वेरी गुड, राइट। क्यों? क्योंकि यार थप्पड़ मार दिया, ठीक है, धक्का दे दिया, बट क्या ये इतना ग्रेव था? उसने क्या किया, राइफल निकाली, गोली मार दी। भाई यहां पे ना तुमने मौका नहीं दिया, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, धक्का दे दिया, ठीक है, तुम भी थप्पड़ मार देते, लात मार देते। तुमने राइफल निकाल के जान से मार दिया, क्या ये ज्यादा हो जाएगा? हाँ, उतना ग्रेव नहीं था। ठीक है। हाँ, उतना ग्रेव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मार्क करेंगे। अब देखो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। रणबीर ने अब यहाँ पर रणधीर की वाइफ सुधा को भी मार दिया, ठीक है, क्योंकि सुधा सपोर्टेड रणधीर, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या यहाँ पर मिलेगा एक्सेप्शन? नहीं। अगेन क्योंकि इतना नहीं था ग्रेव कि भाई आप किसी को जान से मार दो। ठीक है, तो ग्रेव होना जरूरी है, और ये हमें सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस, केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ लोग का ऑप्शन सी भी आया होगा। सी एक बार देख लेता है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन अंडर 300 रिक्वायर्स दैट ऑफेंडर किल्स द पर्सन हु एक्चुअली प्रोवोक्ड हिम। प्रोवोक तो उसने किया है, प्रोवोक ने तो उसने किया है, इट्स जस्ट दैट हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो प्रोवोक किया ना, ये प्रोवोक इतना है ही नहीं, ये प्रोवोकेशन ग्रेव ही नहीं है। मैं तुम्हें भड़का रहा हूं बट भड़काया इतना ज्यादा है ही नहीं, ग्रेव ही नहीं है। पंगा ये है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मार्क करेंगे सब लोग अब. यू हैव 3 more seconds to answer. फटाफट से करो. And the time ends now. ठीक है, इसमें काफी काफी डिवीजन रहा है, राइट. अब देखो, मृणालिनी भी है, दोनों लड़ रहे थे, सब प्रेजेंट थे, सबको गुस्सा आ गया. रणधीर स्लैप कर रहा है और पुश कर रहा है रणबीर को, तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली रणबीर के पास से और रणधीर को मार दिया. क्या मृणालिनी क्लेम कर सकते ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन? नहीं, कभी नहीं. क्यों भाई? क्योंकि रणधीर ने मृणालिनी को कहा प्रोवोक किया? प्रोवोक तो रणवीर को किया ना. रणबीर को किया है तो फिर रणधीर के अगेंस्ट कैसे हो जाएगा वो? मृणालिनी ने तो किया ही नहीं. तो भाई जरूरी है कि मैंने जिसको मारा है उसने मुझे प्रोवोक किया हो. यहाँ पर मृणालिनी को प्रोवोक नहीं किया गया है, तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा. इसीलिए देखो, ए तो हो ही नहीं सकता, यस तो आएगा ही नहीं. एज द quarrel was not of such nature that can lead to provocation. प्रोवोकेशन है भी, तो वो छोड़ो, यहाँ पर प्रोवोक ही नहीं किया है तुम्हें. जो तुम्हारी लड़ाई नहीं है उसमें तो हम क्यों कूद रहे हैं? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर. ए बी में तो बहुत ही कम लोग हैं, सी और थोड़ा सा डी, राइट. देखो, was deeply in shock. She drove the car back to her home, looked for a weapon to came back. अब देखो यहाँ पर अगेन क्या हुआ पंगा. पंगा ये है कि भाई, मैं घर गया, मैंने चाकू उठाया, फिर मैं वापस आया. बहुत टाइम लैप्स हो गया है. इतना टाइम लैप्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया भी है ना, वेदर अ सफिशिएंट इंटरवल हैज elapsed since the provocation, राइट. अगर टाइम हो गया, इसको हम कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड. तो जब हमें प्रोवोक होते हैं ना, जब हमें गुस्सा आता है, हमें बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता होगा, लेकिन वो समय के साथ थोड़ा कम होता जाता है. डज नॉट इंक्रीज विद टाइम, इट ओनली डिक्रीजेस विद टाइम. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड cooling off period. And if it's sufficient, right, then you cannot take the exception of grave and sudden provocation because a certain time has elapsed. Yes, so ninth का आंसर would be option C. कहाँ गया ये, क्या हो गया? ऑप्शन सी. डी नहीं हो सकता क्योंकि यस में आंसर आएगा ही नहीं यार. एनीवन who wants to explain this passage, just raise your hand. ओके, इस बार काफी लोग हैं. यस, नम्रता. नम्रता कहाँ है? नम्रता गायब हो गई. ठीक है, कनिका. सर, इसमें जो यूएपीए के प्रोविजन के बारे में बताया गया है, एंड हाउ getting bail in this is almost impossible because the onus of crime is on the accused and not on the authorities to prove, and it is presumed that the accused is guilty. And it also talks about the CRPC section 438 and how protection, the person can seek protection from the anticipation of being accused. Can seek the protection against anticipatory arrest, and it's not the case in UAPA. And agencies like NAI often use it to kind of seek upper hand when their case is weak and they know they cannot be successful in that. ओके, ठीक है. एनीवन एल्स? यस, तन्मय. हेलो. हेलो सर. यस बेटा, यू आर ऑडिबल. सर तो मैं फिर से समझाऊं? हाँ, इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लेन. नो सर. Okay, ठीक है, thank you. So this passage talks about basically of grant of bail, right? And this has been told to us with reference to section 43 D5 of the UAP Act. And what it tells us is
it is very difficult to get bail in these kind of cases because the burden of proof is different in this case. So if there's a reasonable ground that there's a prima facie case against the person, then he or she will not get bail, right? And it becomes extremely difficult, which is the other way around when it comes to other criminal law cases, yeah, other criminal cases. It has also mentioned this passage also mentions about Husainra Khatun case, right, which basically talked about the rights of under trial prisoners, due to which a section was introduced in the CRPC, which was section 436A, in which it was told that if the accused has spent half of the imprisonment, then he should be granted bail. For example, and his case is still going on. Let's say I have committed an offense, the punishment for which was, let's say, 10 years. My trial is still going on, or let's say it has not been started yet, and I've already been in prison for 5 years. Then now I can be granted bail. I should be granted bail because already I've served half of my sentence, right? Also talks about 438A, which talks about anticipatory bail, where the person can seek bail if he believes, if he anticipates that he might be arrested for an for an for a non-bailable offense, or let's say offense under UAPA. But what happens in UAPA is it is very unlikely that you are going to get bail in UAPA Act, because since it is extremely serious and क्योंकि बहुत ज्यादा serious है, the chances of you getting bail is extremely low. Okay. हाँ, and यहाँ पर एक चीज ये भी बोली गई है कि everyone talks about inquiry, trial, appeal, revision, pre-trial, etc. But you need to pay attention to what happens in investigation, because investigation में ना you come across whatever can be done by the police. So from the moment the person has been arrested to the time when the trial begins, ये जो investigation का time है ना, ये कई बार it might take even months or even years as well. So what happens is the police is bound to file a charge sheet. They can obviously file supplementary charge sheets as well, and the investigation can go on for like any time. And especially this happens a lot with UAP Act. Since it is a serious offense, police demands a lot of time, and it has also been told to us with reference to NIA, right? And it's like an anti-terror agency of India, and deliberately they slow down the entire process of investigation so that the accused can be kept in jail for a longer period of time. Yes, I hope Yotika, you got this now. Okay, let's move to question number 10 now. क्या बात है, इसमें बहुत ज्यादा डिवाइडेड आंसर आ रहा है, इसमें भी स्पेसिफिकली बी और सी में. Now we have to, अब देखो यहाँ पे दो तरह के केसेस होते हैं. One case would be you would be assuming कि भाई because he has been arrested in these kind of cases, so he should not be given bail, etc., etc., etc. But please understand, we have been given this information as well, that 25 lakh rupees from a flat account, ठीक है, to Jack's account, and he did not know about this. Because he did not know about this, can we say that there was no investigation or there was no intention? Yes, and because there was no intention, that's why फेक अकाउंट बोल सकते हैं. शेयर फेक अकाउंट, जैसे शेल कंपनी होती है ना, उस टाइप के अकाउंट्स. हाँ, करेक्ट आंसर है वुड बी सी. ठीक है, प्राइमा फेसा एविडेंस है, बट देखो अपन को कंसिडर करना होगा द इंफॉर्मेशन विच हैज बीन गिवन इन द पैसेज, विच गिवन इन द क्वेश्चन, विच सेज दैट he did not know about it. अगर ये वाला पार्ट हटा देते ना, then definitely the answer should have been B. But because we have been given this information, we can say that yes, you have to consider the facts which has been given. Chalo, mark your answer for question number 11 now. Yes, Medha. And because we know that, right? Okay, a lot of you are getting this correct. Last 3 seconds. The correct answer here is option B. Almost all of you have got this correct. Okay, because उसने half of the sentence has been served by him, and because half of the sentence has been served, he or she can be granted
bail. Mark your answer for question number 12 now. Now, even after years of detention, Happu is still being interviewed by NIA. और यही हमें बताया गया in the passage as well. What NIA does is, it slows down the entire process. Now, can we say that there is violation of Article 21? Yes, because Article 21 tells us about speedy trial. Speedy trial हो नहीं रहा है. That's why there's a violation. Correct answer is option B. ठीक है? Very good. A lot of you got this correct. Mark your answer for question number 13 now. Last 3 seconds. The 10th answer is option C. Sushant. Don't worry, I'll get this sheet uploaded as well with annotations so that you're able to check your answers if you want later on as well. It will be uploaded below the class. Okay. Now, correct answer is option C. Because in this case, we can understand that she was also involved. For the rest to us, right? Kanika, I didn't get you. बेटा मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर बता तो रहा हूँ. साथ में मार्क कर रहे हो ना? साथ में मार्क कर रहे हो ना? No, Monique, that's not required. So D क्यों नहीं होगा? If the accused is booked under provisions UPA, it is almost impossible for a person to secure bail. 13 का बोल रहे हो? Why not? एक second. D क्यों नहीं होगा? Okay. Alleged to be the handler of, and they cannot be denied bail without a prima facie evidence. अरे बिकॉज अगर यहाँ पर एलिज भी है तो भी काफी है, और हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा है जिससे वी कैन से दैट शी इज इनोसेंट. जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जो था, वी नो दैट देयर वाज लैक ऑफ इंटेंट, वी डोंट नो अबाउट दिस इन दिस केस, राइट? एंड दिस इज अ सीरियस वाला ऑफेंस, दिस इज नॉट अ छोटू मोटू ऑफेंस. व्हाई नॉट बी? justified as found to be helping the terrorist. Here better explanation has been given in C, Shubharth, that's why. Purnima, better explanation given in C as compared to B. You have to look for the explanation as well, right? Anyone who can explain this passage? अच्छा, ये passage देखने में बहुत गड़बड़ था. It was prima facie, it looked very difficult, but trust me, this was one of the easiest passage in today's sheet. Anyone who wants to explain can do so now. कनिष्का 12 में D क्यों नहीं होगा? बेटा यही तो बात कर रहा है कि आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है इस तरीके से, तो हमें ये भी तो रेफर करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे दिया है कि he has been rotting in prison for years. That's why. Yes, Pia, you can explain if you want to. Yes, sir. So this passage is about the Order 9, wherein basically when a person, like out of the both parties, which is plaintiff and defendant, if one or the other is not present, then what will happen? So the rule 1 says that both of them must be present on the fixed date and they must be given summons for it. The rule 2 says that if summons are not provided to the defendant because of the plaintiff's fault, then the suit will be dismissed. The Rule 7 then provides that the procedure in cases where the defendant was absent and then the hearing was led, this will lead to a subsequent hearing, but then the reason should be a good cause and it should be reasonable. And then it also says that when the court has adjourned the hearing of this case ex parte, as in without hearing the opinion of the party, then the defendant must provide a good reason for him not being there in the court. And on that, the court will then hear on the next fixed date. And for this rule to be applicable, then the essentials that must be fulfilled are that A, the defendant must not have just
the previous day before the fixed hearing, and then he should have a reasonable cause, and then like the court may provide for a cost or like impose other condition for him. The next rule is the rule 8, wherein the defendant appears but the plaintiff does not. This is more about like if the plaintiff does not, and then the defendant comes up and says something in favor of the plaintiff, then the court might as well put up a hearing in favor of the plaintiff. However, if that is not true, then the court might as well dismiss the case, and nothing will be taken forward. Also, in cases wherein there are multiple plaintiffs, then the rule will apply that even if one of them is is there, then rule 8 will not apply. Okay. So this, अच्छा यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना. This passage did not tell us that we know that Order 9 rules, all these are from CPC, which is Civil Procedure Code. But because it has not been mentioned, it can be applied in each of the case. It doesn't matter if it's a civil case or a criminal case, right? Since it has not been mentioned, we'll not use our external knowledge that Order 9 is of CPC, it will not apply in criminal cases. वो हमें assumption लेके नहीं जाना है, ठीक है? So it talks about multiple rules. Rule number 1, hey, both the parties have to be there. Either you are there or your pleader. Simple rule. Order number 2 provides that if no summons have been given to the defendant and it is due to the negligence of the plaintiff, the plaintiff is at fault. If the plaintiff is the fault, then the suit will be dismissed. Rule number 7, if defendant is not present in the previous hearing, but in the next hearing he gives a good reason, that could be any good reason, and if that's the case, it is also important that the court had adjourned the hearing of the suit ex parte. Ex parte means एक पार्टी की बात सुनी, दूसरी पार्टी की बात सुनी ही नहीं है. अगर वो हुआ है तो वो एक्स पार्टी होगा. अगर एक्स पार्टी हुआ है तो फिर आपको कंटिन्यू करने दिया जा सकता है if there is a good enough reason. Rule number 8, it talks about cases where the plaintiff is absent on the hearing day. Then the court can dismiss the suit by passing an order if the plaintiff is not there. Okay. Summon is court का बुलावा तन्मय. Court is ordering you to come to the court. देखो दोनों में डिफरेंस होता है. Summons means when the court is calling you to the court, to come to the court on the specified time or and day. Warrant is when someone else is going to come, take you from your house and then take you to whichever place it is. Right? Chalo, mark your answer for question number 14 now. अब यहां पर the court has just imposed the fine. It has not been done ex parte. ठीक है? The case was not adjourned ex parte. सिर्फ कॉस्ट दी गई है, सिर्फ फाइन के लिए इंपोज किया गया है. ठीक है? Rimchim, I'm sharing the sheet, beta. Don't worry. And please go through your schedule weekly. ना? You'll find the classes there. Correct answer will be option C. ठीक है? क्यों? Because it was not adjourned ex parte. Ex parte मतलब एक तरफा बात सुन के नहीं हुआ था, सिर्फ फाइन के लिए हुआ. अभी बंद ही नहीं किया है केस, डिसमिस नहीं किया है केस. Okay, so mostly can we apply discretion? Anushi, we have not been given the discretionary powers of the case there. So the correct answer is option D. Now here in this case, the plaintiff is absent. Rule 7 talks about defendant. It is about plaintiff. Plaintiff नहीं आया तो case can be dismissed, and that's what has happened. वहां पे it's not about कि good cause है या reasonable cause है, emotional नहीं होने का. ठीक है, emotional नहीं होने का. Rule 8 says if plaintiff is not there, the case can be dismissed. Plaintiff is not there, the case will be dismissed. That's it. Correct answer is D. Question number 16 का आंसर मार्क करेंगे.
अब यहां पर रूल 7 कैन नॉट बी अप्लाइड क्योंकि उसने नेक्स्ट हियरिंग में कोई गुड कॉज, कोई रीजनेबल कॉज दिया ही नहीं है, एंड बिकॉज कोई गुड कॉज, रीजनेबल कॉज नहीं दिया है, दैट्स व्हाई रूल 7 लगने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, रूल 7 कैन बी अप्लाइड ओनली when the defendant has missed the hearing, he comes and the case has been passed ex parte, he comes in the next hearing, he gives a reasonable cause, he gives a good cause. Here he did not have any good cause, so that's why it will not be applicable. ठीक है बेटा, समन्स के रेफरेंस में कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, because D is irrelevant, defendant was the only one and not many as required, ऐसा नहीं है, defendant can be only one as well. Will be applied because summons against defendants are not filed. Summons के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, it was not required. ठीक है, वो जानबूझ के नहीं आया, इट वॉज नॉट लाइक इसको समन्स नहीं मिला, वो खुद नहीं आया जानबूझ के, सो वी कैन नॉट अज्यूम दिस। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, अरे बट रूल 7 कैसे लगेगा? समन्स वाली बात रूल 7 में थोड़ी होती है, समन्स वाली बात रूल 7 में थोड़ी होती है। हाँ, चलो, मार्क योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 नाउ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17। अब यहां पर वी कैन से दैट द रूल 2 has not been followed because no summon was issued to X, and because no summon was issued, this was due to the negligence of the plaintiff, and that's why rule 2 will be applicable. ठीक है, हाँ, ठीक है। हिमांशु 14 में क्या डाउट है बेटा? It was not adjourned ex parte, the court has only ordered for the fine. केस कहीं भी ex parte थोड़ी डिसाइड हुआ है, क्योंकि वो नहीं आया इसने फाइन के लिए बोला है, केस डिसाइड थोड़ी हुआ अभी। ठीक है, चलो, एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन दिस पैसेज? अच्छा, ये जो पैसेज था ना, ये था थोड़ा लेंदी, and it just had 4 questions. So if you find these kind of passages in the mocks for the first time, you can even leave it. If there's any time left at the end, you can attempt these kind of questions. But first instance, you can even leave this question, leave this passage. Yes, Ishika, if you want, you can explain. Guys, anyone who wants to explain? If you can connect with support team. Anyone? चलो, so ये जो passage है, it's just talked about lease, right? Lease क्या होता है? When you are giving your land in exchange of money or all these kind of things, ठीक है, it could be gold, anything, basically rent पे immovable property देना, rent पे immovable property देना can be said to be as lease. Now we have to understand the essentials. Transferor, so let's say I had given my property to you, so I am the transfer, you are the transferee. It is important that both of us are competent to contract. Basically, you are not minor, I'm not minor, I'm not of unsound mind, you should not be of unsound mind. Simple. नहीं वशी कवर हो गया बेटा, हाँ, खुद से भी पढ़ सकते हो। सेकेंड, सब्जेक्ट मैटर, इट शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैनॉट बी फॉर it should be for immovable property, it cannot be for movable property, right? The transfer must be of a right to enjoy the property, वो भी जो movable property होगी उसका पूरा right होगा। ठीक है, हाँ, if the conditions are changed by the leasee, then the lessor can take back his rights.
तो बीच में भाई तुमने कुछ गड़बड़ किया, तुमने कुछ चेंजेस किए, देन आई कैन टेक बैक माई लैंड। ठीक है, आई कैन टेक बैक ऑल द राइट्स व्हिच आई हैव गिवन टू यू। ठीक है, द लीज डज नॉट एक्वायर एनी ओनरशिप और टाइटल इन द प्रॉपर्टी, इट्स जस्ट लाइक फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम you can enjoy the property. It does not give you any title, it does not give you ownership, and obviously it will be for certain time. It could be months, years, even for day as well, even for day as well. For example, marriage gardens. I hope you all have gone to some or the other marriage halls, marriage gardens. They are taken on rent for a day or two, right? Remember, ऐसे होता है. So you don't become the owner of that property. You just rent that property for 1 day, 2 day, 3 day, whatever has been the condition. Right? It will be for certain day time. It will not be for an uncertain time. कि जब तक रहना है रहो. Cannot be for that. Right? It needs to be for a certain time period. And obviously this will be done in consideration of a price paid, crops, anything. Any kind of consideration can be given here. Okay. Vaishnavi, with reference to this passage, it's one and the same thing. It's one and the same thing. Chalo, mark your answer for question number 18 now. अब यहां पर क्या हुआ है? He has changed the terms. How? Now he has started growing sugar cane. So basically has changed the things, and because he has changed the conditions, that's why there's a breach of contract, and this can lead to eviction as well. So Chetan will succeed. Chetan will succeed. हो सकता है. हाँ हाँ, क्योंकि दीपक ने इन्फॉर्म नहीं किया, दैट्स व्हाई चेतन विल सक्सीड. क्या बात है, ज्यादातर लोगों का सही है. रितिशा, ये रहा रीजंस आर हियर गिवन एज हियर. कि अगर कोई कंडीशन चेंज की तो अपने राइट्स ले सकते हो. राइट ले सकते हो मतलब दूसरे को हटा सकते हो, सिंपल. चलो, मार्क योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19 नाउ. ठीक है, लॉट ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट, वेरी गुड. Sanvi, it's one and same thing. Bhai, you are there in my land. If I can take back my rights, that is basically evicting you. I'll be removing you. Correct answer is option A, because again, Farhan has violated the terms. ठीक है? हाँ. Because he has secretly sublet the flat to Gauri, and he was told that you will not be subletting it to anyone. ठीक है? Without obviously Isha's consent. अच्छा, tell me this. If Isha had given a consent, then would it had been valid? If Isha had given a consent? Yes, because it has been mentioned in the contract that if Isha has given a consent, then it's valid, otherwise it's not. Question number 20. Question number 20, mark your answer now. You have 5 seconds. ठीक है, most of you are getting it correct. अरे, अब इनकरेक्ट क्यों कर रहे हो? Last 3 seconds, guys. फटाफट. Eviction is removing someone from your land. And the time ends now. Correct answer here is option D. ठीक है? Because they both agreed that the rent would be revised every year as per the market value. Arbitrator will be the one deciding it, and it will be appointed by both the parties. And we all understand how contract works, right? So if you and I enter into contract, we are sane, we are responsible. We cannot change it later on, right? Just because it is not as per our whims and fancies. Correct answer here would be D. Jinka B आया will succeed only for recovery of rent, but not for eviction. Basically, if the person is not giving you rent, can you remove that person? Absolutely. भाई रेंट नहीं मिलेगा, आदमी हटाएगा ना. मार्क योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21.
चलो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, बिकॉज द डेट विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम the person has been given possession. The possession has been given on 1st of Feb. 1st of Feb. So obviously these will also start from 1st of Feb. I hope this passage was clear to everyone. We'll directly move to the questions. Works? Chalo. Mark your answers now for question number 22. Here in this case, पंगा कहाँ हुआ? रोशन कोबा, इंडियन सिटीजन बट हैज गेन्ड रेसिडेंसी इन यूरोप। यहाँ पे क्या दिया भाई? शुड बी रिसाइडिंग इन इंडिया, शुड बी रिसाइडिंग इन दैट कंट्री, so that's why it's not applicable. Correct answer would be D. ठीक है, परचेज फ्रॉम हाई गैजेट्स एंड नॉट टेक गैजेट्स ऑनलाइन। बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लिपकार्ट भी लायबल हो सकता है। हाँ, फ्लिपकार्ट से कहते हैं, फ्लिपकार्ट भी लायबल हो सकता है। 23 का आंसर मार्क करेंगे सब लोग। ओके, a lot of you are getting this correct। ठीक है, एबीसी में गड़बड़ है। अब यहां पर क्या पंगा हुआ है? जरूरी है कि प्री परचेज में यू नो द कंट्री ऑफ ओरिजिन, पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्री का प्री परचेज में, क्योंकि यहां पर नहीं है। दैट्स वाई ये गलत होगा। यहाँ पर दिया है कंट्री ऑफ ओरिजिन, बताना पड़ता है। कौन सा पॉइंट है, एक बार देखना पड़ेगा। यस, बी पॉइंट में दिया है। यार बी पॉइंट, अच्छा सेकंड, ये डिस्प्ले नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ गुड्स एट प्री परचेज स्टेट, वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं है बेटा, डेटा नहीं दिया है, वो मिसिंग है। चलो, मार्क योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24 नाउ। Will she succeed? Yes, फॉल बैक लायबिलिटी लग जाएगा। दूसरे का नहीं दिया सुशांत, दूसरे का नहीं दिया है। करेक्ट आंसर इज डी। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बेटा 21 का आंसर इज आ गया 21, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, फॉल बैक लायबिलिटी। या क्वेश्चन नंबर 25, मार्क योर आंसर्स नाउ। अब यहां पर अपन बोल सकते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, वेरी गुड, लॉट ऑफ यू हैव गॉट दिस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर मार्क करेंगे सब लोग। सॉमसियांग लायबल हो सकता है बिकॉज इट इज सेलर ऑन द मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म। बहुत बढ़िया। हम्म, क्योंकि वो मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे है, इसलिए यहाँ पर वो लायबल हो सकता है। एब्सोल्युटली, मार्केट प्लेस की बात की जा रही है ना, मार्केट प्लेस की बात की जा रही है। चलो, आई थिंक ये वाला तो सबको पता ही है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में। व्हाट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बेसिकली मींस कि भाई तुम गायब हो और कोर्ट को लग रहा है कि ये इंसान भगोड़ा हो गया। ठीक है, विजय माल्या, ऑल दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स, वो सब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। ठीक है, कि अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का ये होता है कि
अगर तुम्हें मिल गया, जिसको भी मिल गया, जहां भी मिल गया, अरेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। 27 का आंसर मार्क करेंगे सब लोग। मार्क योर आंसर नाउ, यू हैव 3 seconds। तो दिव्यांशी एक्सप्लेन नहीं करना बेटा, टाइम नहीं बचा ना, नेक्स्ट टाइम। चलो, लॉर्ड ऑफ यू हैव गॉट दिस करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि भाई वो छुप गया है, अंडरग्राउंड हो गया है। हाँ रितिशा, फॉल बैक 25th में है बेटा, सॉरी 24th में। 28th का आंसर मार्क करेंगे सब लोग। मार्क योर आंसर नाउ। ठीक है, लास्ट 3 seconds। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि अब यहाँ पे कोई रीजन टू बिलीव नहीं है। वो आ रही है बार बार, शहर छोड़ के नहीं जा रही है, हर बार पुलिस के पास आ रही है, तो कोई रीजन नहीं कि भागेगी, क्योंकि कोई रीजन नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है। मार्क योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। अब मिल ही नहीं रहा है और वारंट भी इशू हो गया है, ठीक है, क्योंकि भाग गया है, इसलिए यहाँ पर गड़बड़ है और अपन को लग रहा है कि भाग गया है, जो कि अपन नहीं चाहते। मार्क योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। भगोड़ा मीन्स एब्सकॉन्डर। विजय माल्या। चलो, मार्क योर आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जोशी जी हियर इज द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और यहां पर जोशी जी की कार भी लेके जाई जा सकती है, बिकॉज द पुलिस हैज दिस पावर ऑफ सीजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और चूंकि ये पावर है इसलिए वो उसका यूज कर सकते हैं। फटाफट से मुझे बताओ कितने करेक्ट गए आउट ऑफ 31। एंड आई एम होपिंग कि सबने 31 कर तो लिए होंगे यार, बिकॉज यू हैव टेकन गुड इनफ टाइम। आई एम एक्सपेक्टिंग 31 में से 25 से 27 करेक्ट गए होंगे। वेरी गुड विश्वा, वेरी गुड श्रेया, श्रेयांश, वेरी गुड यानित्या, वंडरफुल वंडरफुल। एनीवन हु हैज गॉट इवन 25 भी कम बोल दिया यार, आई शुड से 26 से 28, इतना आना चाहिए था, राइट, बिकॉज तुमने वो बहुत छोटा पैसेज किया है। प्लीज ध्यान रखना सब लोग, भाई बहुत सारी प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। अगर तुमने ये मिस कर दिया ना, तुम गड़बड़ कर दोगे। मेक श्योर कि अगर तुमने दिन में 50 क्वेश्चन लगाए, बहुत बढ़िया, उसका एनालिसिस करो। जब तक तुम समझोगे नहीं कि तुम्हारा गलत क्यों गया है, या गलत में क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर दैट यू आर एनालाइजिंग एवरीथिंग, यू आर एनालाइजिंग ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो भी तुम प्रैक्टिस करते जा रहे हो, ठीक है। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस।